Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we are studying the question answers section, the last exercise of the lesson. The second lesson, Ad-Darsu Thani, lesson number 2, Al-Hadith al-Nabawi al-Sharif. So among the exercises, Tamarin, the last exercise in the 16th session number 16, we are studying question and answers. Questions will be in Arabic and answers also must be in Arabic only. No need to write translation. I have given translation here to understand the questions and answers perfectly. So, Ajib anil aslatil atiyah. Answer the following questions. You will be given questions in Arabic and you will have to write answers in Arabic only, not in English. Okay, the first question. Ma huwa al-hadith sharif? What is hadith sharif? Ma, what, huwa, it. Hadith sharif, the holy hadith. We are studying this. This is the lesson's name, Al-Hadith Sharif, Al-Hadith al-Nabawi al-Sharif. So, ma huwa al-Hadith Sharif? What is it? Hadith Sharif. So, simple translation, what is Hadith Sharif? Al-Jawab, answer. Al-Hadith al-Sharif. The Hadith Sharif, the holy hadith is, the holy saying is, it is tafsil, it is the explanation, washarhun, and detailed version of Lil Quran Majid, the Holy Quran. And Hadith Sharif is the explanation and the detailed version of the Holy Quran. Answer. The Holy Hadith is the explanation and the detailed version of the Holy Quran. Simple question and simple translation. Answer. So, Mahul Hadith Sharif, what is Hadith Sharif? Al Hadith Sharif huwa tafsilun wa sharhun lil Quran al Majid. You will have to learn this answer like this. Al Hadith Sharif, it is there in the question. Then you will have to write huwa tafsilun, explanation, wa sharhun lil Quran al Majid. Okay, the first question is over. What क्या है उर्दू में व्हाट इज हदीस शरीफ? हदीस शरीफ क्या है? हदीस शरीफ का मतलब क्या है, मायना क्या है? तो हदीस शरीफ वो कुरान मजीद का की तशरीह, कुरान मजीद की तशरीह और उसकी शरह है, उसकी तौज़ीह, तफसील और उसकी शरह है. तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन. मन काना रुवातुल हदीथ शरीफ? मन काना रुवातुल हदीथ शरीफ. मन कौन, खाना था या थे, रुवातुल हदीथ शरीफ हदीस के बयान करने वाले, हदीस को बयान करने वाले कौन थे? तो मन काना रुवातुल हदीथ शरीफ, who were the reporters of, who were the narrators of hadith sharif? Ruwat is plural word of rawin. We have studied in the words meaning there. Ruwatun is plural form of rawin. Rawi हदीस के बयान करने वाले, रावी. हदीस की किताबों में हम देख सकते हैं रूबी अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम से रिवायत की जाती है. तो रूबिया, रवा, यरवी, रूबिया, उससे राविन रिपोर्ट करने वाला, रुवातुन रिपोर्ट करने वाले, प्लूरल है. सो मन कान रुवातुल हदीथ शरीफ, who were the reporters of hadith sharif, the holy hadith? Who were the reporters of hadith sharif? Okay. Al Jawab, answer. Ruwatul hadith sharif
अस-सहाबा व सहाबियात व ज़ौजात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस के रिपोर्ट करने वाले, बयान करने वाले सहाबा किराम है, सहाबियात है, सहाबा मेल कंपेनियंस, मर्द हजरात, व सहाबियात खवातीन सहाबियात, व ज़ौजात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियाँ, ज़ौजात, ज़ौजात मैंने आपकी बीवियों को, वाइफ्स को बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तो उनसे है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब सहाबा रहते हैं, सहाबियात, और अल्लाह के नबी के अज़वाज मुतहरात बीवियाँ रहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को ज़्यादा वही लोग सुनते हैं, तो उनसे रिवायत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, सुनने वाले सहाबा, सहाबियात और ज़ौजात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीवियाँ, तो उनसे है ना ये हदीस के रिवायत करने वाले रिवायत करते हैं, हम उनसे सुना, हम उनसे सुने, ये सुने, वो सुने, बस इस तरह है ना रिवायत करते हैं। तो हदीस के रिवायत करने वाले, हाँ, तो ट्रांसलेशन देखेंगे इंग्लिश में। आंसर, द रिपोर्टर्स ऑफ हदीस शरीफ वर मेल एंड फीमेल कंपेनियंस ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा और सहाबे, सहाबा प्लूरल ऑफ सहाबी, सहाबियात प्लूरल ऑफ सहाबियत, सहाबिया, तो सहाबा मीन्स मेल companions, sahabiyat female companions, and the wives of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. Zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam means, zawja means wife, zawjatun zawja wife, zawjat wives. So zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, the wives of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. So the reporters of hadith were male and female companions and the wives of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, now next question. These are very short question answers, so often these questions are asked, so better you learn by heart, very easy to learn. Third question, ayyu wahyin khafiyun, ayyu wahyin khafiyun, which wahi is khafi, which one is the secret wahi, which one is the secret wahi, revelation. Wahi means revelation. We have already studied secret wahi, open wahi, visible wahi, invisible wahi. So regarding that, this question is here. Ayyu wahiyun khafiyun, which one is the secret wahi, revelation? Which one is the hidden wahi or invisible wahi? Khafiyun means hidden, secret, invisible. कौन सी वही खफी है, छुपी हुई, या छुपी हुई वही कौन सी है, पोशीदा वही कौन सी है? अल जवाब, आंसर इज वेरी इजी। अल हदीस वहीयुन खफीयुन, हदीस शरीफ इज वही खफी, खफी वही, सीक्रेट वही। The holy hadith is the secret wahi. So al hadith you will have to add wahyun khafiyun is already there in the question. So only you will have to write al hadith. Then it will become the answer. So al hadith wahyun khafiyun, hadith शरीफ क्या है? छुपी हुई वही है या पोशीदा वही है। तो holy hadith is the secret wahi, the holy hadith is the hidden wahi, the holy hadith is the invisible wahi, you can say. So al hadithu wahyun khafiyun. So ayyu wahyin khafiyun, al hadithu wahyun khafiyun. Very easy to learn. The next question, fourth question, ayyu wahyin jaliyun. Similar question, the difference is khafi and jali. Ayyu wahyin jaliyun, which wahi is the open one? Which one is the open wahi, clear wahi? Jali means open. Answer is very easy. Answer, the Holy Quran is the open wahi. Al-Quran al-Majidu wahyun jaliyun. The Holy Quran is the open wahi, visible wahi, clear wahi. So these two questions are very important and very easy to learn. Better you learn by heart so that you may able to give answer correctly. So ayyu wahiyun khafiyun, al hadithu wahyun khafiyun, ayyu wahiyun jaliyun, al Quran al Majid wahyun jaliyun. The Holy Quran is the open wahi. Okay,
Wahi means revelation. We have studied. Now, question number 5. Ma inkarul hadith sharif. Ma what? Inkar, rejecting or rejection. Al hadith sharif of hadith sharif. And what is the rejection of hadith sharif? And what about the what about the rejection of hadith sharif? And what if you reject the hadith sharif? So I wrote the question meaning here. What is the consequences of? What is the consequence of rejecting the holy hadith? What is the consequence of rejecting the holy hadith? Ma inkar bil hadith. Now what about rejecting the holy hadith? And if we reject the holy hadith, then what will happen? So better translation. What is the consequence of rejecting the holy hadith? Okay. Al Jawab answer. Inkar bil hadith يعتبر إنكارا للقرآن الكريم. Very important. إنكار الحديث يعتبر إنكارا للقرآن الكريم. Answer. The rejection of the Holy Hadith is considered as the rejection of the Holy Quran. إنكار الحديث إنكار الحديث, the rejection of Holy Hadith, يعتبر is considered إنكارا as the rejection del Quran al-Kareem of the Holy Quran. So if we reject the Holy Hadith, it will be as if we are rejecting the Holy Quran. So we cannot reject, or no one can reject the Holy Hadith. If anyone rejects, he is rejecting the Holy Quran. So the rejection of Holy Hadith is considered as the rejection of the Holy Quran. As we studied in our lesson, as Allah subhanahu wa ta'ala himself said, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. And whatever Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gives you, you take them, you receive them, and from whatever the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stops you, prevents you, prohibits you, you stop there, you follow it. You follow it to stop. So that is the Quranic verse. So rejection of the Holy Hadith is considered as the rejection of the Holy Quran. Now next question. Man kanal Imamul Bukhariyu. Man kanal Imamul Bukhariyu. Imam Bukhari kaun the? Who was Imam Bukhari? Who was Imam Bukhari? Very simple question. Man kanal Imamul Bukhariyu. Who was Imam Bukhari? Imam Bukhari kaun the? Question. Al Jawab answer. Kana huwa Imamul Hadith Sharif. वो इमाम हदीस शरीफ के इमाम थे. काना थे, हुआ वो इमाम थे, हदीस शरीफ के इमाम थे. वेरी सिंपल क्वेश्चन आंसर. मन कानल इमामुल बुखारी. इमाम बुखारी कौन थे? कान हुआ इमामुल हदीस शरीफ, या कानल इमामुल बुखारी इमामुल हदीस शरीफ, ऐसा भी लिख सकते हैं. ये आसान है. कान हुआ इमामुल हदीस शरीफ. He was the Imam of हदीस शरीफ. उनकी किताब ही है हदीस की बुखारी शरीफ, बहुत फेमस है. वो सहाय सिता 6 सही हदीस की किताबों में नंबर 1 है वो बुखारी शरीफ. नेक्स्ट वन, 7th क्वेश्चन. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद करना भी आसान है. उद्कुर अस्माअ अइम्मतिल हदीसिल मशहूरीन. उद्कुर अस्माअ अइम्मतिल हदीसिल मशहूरीन. उद्कुर बयान करो, अस्मा नामों को, अइम्मतिल हदीस शरीफ हदीस के मशहूर इमामों के नाम बयान करो. हदीस शरीफ के मशहूर इमामों के नाम बयान करो. Mention the names of the famous imams of Hadith Sharif.
A'immatun is the plural word of imam. Imam singular, a'imma plural. मशहूर से मशहूरीन famous plural है, singular शहीर या मशहूर. So उذकुर अस्मा अइम्मतिल हदीथिल मशहूरीन, mention the names of the famous imams of hadith शरीफ. तो डायरेक्ट वो 6 नाम बयान किया गया यहाँ पर. फर्स्ट वन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिरमिदी, इमाम इब्न माजा. ये 6 नाम याद कर लेना. यू विल हैव टू लर्न बाय हार्ट these 6 names of imams of hadith शरीफ. इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम तिरमिदी, इमाम इब्न माजा. Answer: the famous imams of hadith sharif are 6 in number. They are Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidhi and Imam Ibn Majah. Okay, तो ये 6 नाम याद कर लेना. पूछ सकते हैं. और अपनी जिंदगी में भी, अपनी लाइफ में भी है ना, ये सब याद कर लेना. 6 हदीस के इमामों का नाम. बहुत से हैं मुहद्दिसीन, लेकिन उनमें मशहूर ये 6 इमाम ही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन. अय्यु शैइन यंबगी अन यकून क़ब्ल अल कलाम. अय्यु शैइन यंबगी अन यकून क़ब्ल अल कलाम. वो कौन सी चीज है जिसकी जरूरत है, जो जरूरी है, यकून क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले होनी चाहिए. बात करने से पहले होनी चाहिए वो चीज. वो कौन सी चीज है वो? What is it necessary before talking? What is it necessary before you talk? मालूम है सबको. हदीस बहुत फेमस है. चले हदीस में जंगली हम बोलते रहते हैं. तो अल जवाब आंसर अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम. ये हदीस के लिए ऐसी क्वेश्चन बनाने थे. अय्यु शैइन यंबगी अन यकून क़ब्ल अल कलाम. वो कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है बात करने से पहले वो होनी चाहिए. वो कौन सी चीज़ है? तो आंसर क्या है? अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम. ग्रीट विद सलाम बिफोर यू टॉक. बात करने से पहले सलाम करो. अस्सलाम सलाम, क़ब्ला पहले, बिफोर, अल कलाम टॉक बात. इतनी ही है हदीस में. मुख्तसर है, लेकिन मीनिंग जब करेंगे इस तरह करना पड़ेगा. ग्रीट विद सलाम, नहीं तो से सलाम बिफोर यू टॉक. बिफोर योर कन्वर्सेशन, बिफोर योर टॉकिंग, it should be, first thing should be सलाम, saying सलाम. तो अस्सलामु क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो. तो ये हदीस याद कर लिया. If you have learned this hadith, then when this question will come there, you will have to remember क़ब्ल कलाम. क़ब्ल कलाम, if you remember these words, क़ब्ल कलाम, before you talk, before our talk, बात करने से पहले, then you can remember assalamu qabla al-kalam. Only you will have to write assalam before qabla al-kalam. Then it will become the answers. Qabla al-kalam, before that you will have to add assalam. Assalam. Alif lam, sin, lam, alif, mim. No need to write fatha, kasra, i'rab, zabar, zer, pesh. But simple you can write the huruf, letters without any mistake. Okay. So ayyu shay'in yanbaghi an yakuna qabla al-kalam. बात करने से पहले कौन सी चीज होनी चाहिए? What is it necessary before talking? अल जवाब अस्सलामु क़ब्ल अल कलाम. Say salam or greet with salam before you talk. Okay, so 8th one is over. Now next 9th question. मिन अय्यि मैदानिन खतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिल वदा. मिन अय्यि मैदानिन, from which मैदान, from which ground, कौन से मैदान से. खतबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम delivered the speech. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिए. खतबा मीन्स खुतबा दिए. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फी हज्जतिल वदा, हज्जतुल वदा के मौके पर. तो फ्रॉम विच मैदान, फ्रॉम विच ग्राउंड,
The Holy Prophet ﷺ delivered his sermon, delivered his speech, fi Hajjatul Wada, during Hajjatul Wada, during the last final Hajj. Answer: from which Maidan ground the Holy Prophet ﷺ delivered his sermon during Hajjatul Wada, and the last pilgrimage. Hajjatul Wada means the final pilgrimage. Answer: Al Jawab: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من ميدان عرفة. खतब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लम खुतबा दिए फी हज्जतुल वदा, हज्जतुल वदा के मौके पर, मिन मैदान अरफा, अरफा के मैदान से. The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम delivered his speech फी हज्जतुल वदा, in the last pilgrimage, Hajj pilgrimage, min मैदान अरफा, from मैदान अरफा. Okay, answer: the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम delivered his sermon at Arfa Maidan, at Arfa Maidan during Hajjatul Wada. What can write from Arfa Maidan during Hajjatul Wada? So it was at Arfa Maidan. Arfa Maidan. Okay. Next question. Last question. 10th question. And the question starts with Hal. Then all of you already know when the question word Hal is there in the beginning, then answer will be very easier. Just you will have to add Naam in the place of Hal, and the remaining part at most of the occasions, at most of the places, then you will have to repeat, rewrite the remaining part of the sentence. Okay. So the question is Hal Hadithu. Better read like this: Halil Hadithu. Halil Hadithu. When combine this question word Hal with Al, this lam tarifi, then this lam is given kasra, zir. So original jazmi is there, sukun is there, but when you combine, this lam will get kasra, zir. So Halil Hadith Sharif Tafsilun lil Quran al Kareem. Is Hadith Sharif the explanation of the Holy Quran? Already we know, we have been studying all these things. Is Hadith Sharif the explanation of the Holy Quran? Al Jawab, very easy. Naam, yes. Then remaining part. Al Hadith Sharif Tafsir lil Quran al Kareem. Yes, Hadith Sharif, the Holy Hadith, is the explanation of the Holy Quran. Okay, Al Hadith Sharif Tafsir al Quran Kareem is Hadith Sharif. क्या Hadith Sharif कुरान शरीफ की तफसीर है, कुरान शरीफ की तशरीह है, तवज़ीह है? नाम, यस. अल हदीस शरीफ तफसीर अल कुरान करीम. हाँ, हदीस शरीफ कुरान शरीफ का तफसीर है, कुरान शरीफ की तवज़ीह है, तशरीह है. यस, हदीस शरीफ is the explanation of the Holy Quran. Okay, now we have completed almost all the exercises of the second lesson. Now all of you must study all these question answers. Questions will be there in Arabic, the question paper, and you will have to write the answers in Arabic only. No need to give the translation of the questions or answers. I have given all this translation for you students to understand better perfectly the question answer, and it will be easier for you when you have all the translation. Then it will be easier for you to learn by heart all these question answer, words meaning, and passage translation, and with reference the context, everything. So inshallah, and some more exercises are there. Match the following or fill in the blanks, so also etc. You can see all those things in the book, and with the help of these exercises or these explanations,
you can be inshallah you will be able to solve all those. You'll be able to solve all those exercises also. And for example, fill in the blank. Assalamu qabl kalam. One word will be missing from there, and almost all are hadith only. Then you can fill it. If you already know Assalamu qabl kalam, then if any word is missing, you can add. You can fill that blank. So it is like that only. Al barakatu ma'aka birikum. Some word will be missing from that hadith. You can add. You can fill that blank because already you know the hadith. So it is like that only. So it will be very easy. So go through those uh, exercises also. Anyway, almost all important exercises we have studied through these video lessons. Now we are finishing, concluding our this session. Inshallah, next we will study a new chapter in another unit. Till then, inshallah, ma'assalam, ma'assalama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.